Om Shanti Om Avyakti Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. आज है दिन 14 हर खजाने को सफल कर C'est le jour 14. सफलता मूर्त बनो Utilisez chaque trésor de façon utile खुशी की अनुभूति et devenez une incarnation du succès. Le sujet de ce soir, expérimenter le bonheur du succès. Et le signal Avyakt. सफलता प्राप्त करने का विशेष आधार है हर सेकंड La base principale pour obtenir le succès est d'utiliser chaque seconde, chaque souffle et chaque trésor d'une manière utile. Quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez connaître le succès, vos pensées, vos paroles, vos actions ou vos relations et connexions, continuez à utiliser tout cela pour vous et pour les autres âmes d'une manière utile. Ne laissez rien se perdre et vous continuerez automatiquement à expérimenter le bonheur du succès, car utiliser d'une manière utile signifie devenir une incarnation du succès au moment présent et accumuler pour l'avenir. Om Shanti. Om Shanti. Il y a plusieurs types de bonheur que nous pouvons voir. S'il y a des obstacles qui viennent et s'il y a des obstacles et puis ensuite s'ils s'en vont, vous êtes si heureux. Et quand il y a de l'harmonie dans les relations, on se sent en bonheur. Il y a plusieurs types de bonheur. Baba dit aujourd'hui que d'expérimenter le bonheur du succès. L'essence de succès, c'est l'expérimentation. Plus on expérimente le bonheur, c'est à ce moment-là que ça commence à s'accumuler. Et quand on commence à voir le succès s'accumuler intérieurement et extérieurement, il y aura de plus en plus de prospérité. Et quand il y a du succès, il y a de la prospérité. Et la vibration, l'atmosphère, tout est très agréable. Et cela, c'est à cause du succès ou grâce au succès. Et quand il n'y a pas ce succès, il y a du désespoir ou du découragement. Et Baba nous a montré comment on peut y arriver. Aujourd'hui, Baba parle surtout que la base pour expérimenter le succès, c'est d'utiliser chaque seconde, chaque souffle et chaque trésor d'une manière utile. Chaque souffle, chaque seconde. D'abord, le temps, hein, cette valeur du temps, et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de temps qui est gaspillé et on ne se rend même pas compte où le temps a passé.
Et souvent, on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de temps. Alors, quand on veut avoir du succès dans nos pensées, nos paroles et nos actions, et même dans nos relations et nos connexions. Alors, continuez à utiliser tout cela pour vous et pour les autres âmes d'une manière utile. On voyait Brahma Baba, il était toujours bonne humeur et heureux parce qu'il gagnait un revenu à chaque seconde et il accumulait à chaque seconde, à chaque minute. Et il pensait au progrès du soi, comment il pouvait faire un service illimité, que ce service devait continuer. Et Baba dit, ne laissez rien se perdre et vous continuerez automatiquement à expérimenter le bonheur du succès. Car utiliser d'une manière utile signifie devenir une incarnation du succès au moment présent et de l'accumuler pour l'avenir. Plusieurs personnes regardent le présent, cette tâche a été accomplie, mais on doit aussi accumuler du succès pour le futur. C'est pas nécessairement automatique, donc on doit faire des efforts pour accumuler pour le futur. On doit vivre le temps présent, le moment présent, et le lendemain, c'est déjà notre futur. Mais le futur, c'est aussi, un autre futur, c'est aussi, alors c'est pour cette vie-ci, mais c'est aussi pour la prochaine vie qui sera à l'âge d'or. On doit toujours avoir un compte d'épargne énorme et faire en sorte qu'il n'y ait aucune fuite et qu'il n'y ait pas de gaspillage et qu'on utilise tout à bon escient d'une façon utile. Et en l'utilisant, on doit être attentif à comment on utilise. Et aussi, il y a beaucoup d'éléments subtils. Le revenu, on gagne un revenu, on dépense et aussi on doit économiser. Et souvent, les âmes ont des plans, des planifications pour vérifier. Et nous sommes tous les enfants de Baba. Et Baba est dans ce drama et avec Baba, il y a toujours quelque chose qui va bien se passer. Et tout est utilisé à bon escient. Et à ce moment-là, on pourra aussi économiser pour le futur. Donc, toujours garder votre cœur très généreux et que les mains aussi donnent et toujours penser. Et le résultat que nous verrons, c'est qu'on ne le verra peut-être même pas du point de vue extérieur. Mais c'est pour cela que on doit être vraiment sans inquiétude. Et on doit avoir beaucoup de foi et très facile. Et toujours focalisé sur le fait d'économiser, d'accumuler. Donc, faites très attention et en faisant attention, c'est là qu'il y aura l'accumulation pour le futur. Om Shanti, c'est le Murli Avyak depuis 1969.
Alors, c'est le 9 octobre 1971. अवेक्तवाणी तारीख है 9 अक्टूबर Alors, la 1971 Diac-Norly, le 9 और octobre वृद्धि से 1971, सर्विस में वृद्धि l'augmentation du service आज grâce à une यह attitude संगठन puissante. किस Dans लक्ष्य से quel but ce प्रबंधित है? rassemblement a-t-il été संगठन organisé? में Il y a प्राकृतिक bien sûr des संसाधन avantages à se réunir. लेकिन Mais आपस quel est में le घुल but de मिलने का se भी लक्ष्य réunir? क्या रखा है? Avez-vous कुछ pensé नया à de nouveaux करने projets? सोचा है Ce rassemblement क्योंकि यह rassemble संगठन les को âmes les plus élevées et les âmes सर्वश्रेष्ठ les plus आत्माओं का proches. व समीप La आत्माओं vision के de chacun est समीप tournée vers les सर्वश्रेष्ठ âmes proches और et श्रेष्ठ élevées. आत्माओं के ऊपर है Les âmes élevées doivent donc तो श्रेष्ठ réfléchir आत्माओं को à la manière d'apporter de la सर्वसम्मति grandeur व et de la अपने nouveauté संगठन में au श्रेष्ठता rassemblement et, और et, नवीनता कैसे et à leur लाएं service. यह La सोचना nouveauté है signifie créer des plans नवीनता किसको कहा si जाता है faciles, mais si puissants, des projets faciles नवीनता et puissants, que अर्थात les âmes ऐसा seront कोई attirées à distance सर्वश्रेष्ठ par ce pouvoir. Par पावरफुल exemple, प्लान बनाओ peu importe à जो quelle यह है distance se पावरफुल trouvent प्लान les papillons, पावर द्वारा आत्माओं को आकर्षित et les करे papillons de nuit, ऐसा l'attirance de la प्लान बनाओ flamme est जो capable दूर से d'attirer ही ces papillons de आत्माओं को nuit. आकर्षण हो De même, s'il जैसे y a un परमाणु feu होते हैं intense qui brûle तो quelque शुरुआती part, आकर्षण vous pouvez शुरुआत ressentir la में chaleur à distance. चाहे कितना भी दूर हो Vous comprenez qu'il y a खींचेगी un feu là-bas et vous êtes वाकई attiré par तेज ce feu. अग्नि जगी हुई De la même होती है manière, faites en दूर से sorte que ही votre उसका forme सिर्फ अनुभव होता है et celle de votre समझते service हैं soient यहाँ telles que कोई les âmes soient अग्नि attirées है de loin et se वह कोई rapprochent. बिल्कुल De même que छोटी lorsque सी quelque chose se स्फूर्ति होती propage है dans l'atmosphère, तो दूर son से ही influence उसकी शीतलता का s'étend ou se अनुभव répand और sur une आकर्षण assez होता longue है distance. De la même manière, tous les उसी yogis रीति से faciles et les âmes ऐसा élevées devraient rendre leur आत्माएं atmosphère बनाओ si और spirituelle सर्विस की que cette रूपरेखा बनाओ spiritualité attire जो les दूर से autres ही âmes vers eux. आकर्षण होती Quelle est la आत्माएं principale स्वीकार méthode करनी pour चाहिए créer cette atmosphère? जैसे Vous devez वायुमंडल créer में कोई चीज l'ambiance à बनाई travers votre जाती है attitude. तो Le सारी fondement de वायुमंडल में l'atmosphère est votre काफी दूर attitude. तक उसका प्रभाव छाया होता है Jusqu'à ce que इसी votre रीति से attitude soit puissante, इतने il ne peut y avoir सर्वश्रेष्ठ de योगी spiritualité dans व श्रेष्ठ l'atmosphère. आत्माएं अपने वायुमंडल को ऐसा रूहानी बनाएं जो आसपास Le का fondement de वायुमंडल l'atmosphère est votre attitude. Jusqu'à ce que रूहानियत के votre कारण service que vous désirez, आत्माओं को अपनी तरफ खींच ले l'attitude est la graine de l'arbre et वायुमंडल grâce को à elle, vous बनाने pouvez के faire लिए progresser विधियां votre कौन सी personne होती हैं et votre service. वायुमंडल कैसे बन La सकता है base de l'expansion जिससे est वायुमंडल l'attitude. बनाना Pour que है votre attitude devienne puissante, जैसे vous देखो devez la remplir d'une seule कोई chose, के अंदर qu'il किसी y ait de la miséricorde वृत्ति et में du कोई बात आ bénéfice pour जाती chaque है âme. En ayant तो cette वो attitude क्या envers कहलाती toutes है les âmes, vos vibrations de वायुमंडल miséricorde et में de मेरे bénéfice प्रति atteindront क्या कहते हैं automatiquement ces âmes. Comment वायुमंडल le का son de radio संदेश vous मिलने parvient-il? तो Il वृत्तियों capte les को जब तक vibrations dans पावरफुल नहीं l'atmosphère. बनाया Il है capte les vibrations तब via तक le वायुमंडल की fil रूहानियत ou le व sans सर्विस fil. में Grâce à वृद्धि la जो चाहते science, हैं chacun वह d'entre eux नहीं हो peut सकती capter le son de अगर chacun et बीज l'entendre. पावरफुल होता तो Cela वो se शुरू fait ही पावरफुल grâce होता है तो au बीज है réseau sans वृद्धि fil et इससे ही अपने सर्विस ici, की वृद्धि c'est कर grâce सकते au हो pouvoir वृद्धि spirituel. का आधार वृत्ति है और वृत्ति में क्या भरना है जिससे वृत्ति पावरफुल हो जाए Alors, c'est à suivre. वह Om एक Shanti. ही बात है कि वृत्ति में हर आत्मा
के प्रति रहम व कल्याण की वृत्ति रहे तो ऑटोमेटिकली आत्माओं के प्रति यह वृत्ति होने के कारण उन आत्माओं को आप लोगों के रहम व कल्याण का वाइब्रेशन पहुंचेगा। जैसे रेडियो का आवाज कैसे आता है, वायुमंडल में जो वाइब्रेशन होते हैं उनको कैच करते हैं, वायरलेस द्वारा वाइब्रेशन कैच करते हैं। तो यह सब साइंस द्वारा एक दो के आवाज को कैच कर सकते हैं व सुन सकते हैं। तो वह है वायरलेस द्वारा और यह है रूहानी पावर द्वारा। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा।
Écoutez avec amour, acceptez dans le cœur et devenez un ange. Les paroles élevées de Bap Dada. Quand vous dites le mot mon, rappelez-vous ce qu'est ma nature est. Le 9 janvier 1996. Même les personnes du monde appellent l'esprit un cheval et disent qu'il fait de grandes courses, que les courses, qu'il court très rapidement. Votre esprit devrait-il faire la course? Vous avez les rênes de Shrimad. Si les rênes sont serrées sur le cheval, vous ne pouvez pas avoir de bouleversement, mais que faites-vous? Bap Dada voit et sourit à comment vous êtes en train de conduire votre cheval et votre chariot, comment les rênes sont dans vos mains. En bougeant, qu'arrive-t-il quand votre esprit et votre intellect, ce sont ces aspects qui tiennent les guides et ils sont distraits par les scènes secondaires. Si les rênes ne sont pas aussi serrées, si les guides sont trop lousses, à ce moment-là, l'intellect ne peut pas, devient espiègle. Alors, gardez toujours ces rênes dans vos mains, dans votre conscience, et votre esprit maintient les rênes de la Shrimad. Alors, si votre esprit est espiègle, il ne se passera rien et vous allez atteindre votre destination. La Shrimad s'applique à chaque pas. Non seulement pour le célibat, Shrimad a été donné pour chacune